Okay, dear friends, in the earlier session of economics, if you recollect, we completed the concept better called as indifference curve analysis. Now, today I would be discussing the new part called as business cycle. Business cycle. See, as a student as well as a teacher of economics, we have repeatedly discussed one concept, one specification that we have studied that every economic, every economy witnesses ups and downs. There are a lot of fluctuations in economic activities. Every economy witnesses fluctuations. And those fluctuations which are there in the economy are called business cycles. I can say कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने इतना बहुत स्पेसिफिकली बहुत फैंटास्टिकली कहा है that the rhythmic fluctuations in the economic activities throughout the world are called as business cycles. Rhythmic मतलब इसमें एक रिदम होता है, उसके हिसाब से उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. The rhythm makes the fluctuations go on. So I can say business cycles in simple words are business cycles are the fluctuations in economic activities, fluctuations in economic activities throughout the world. Throughout the world, there would be fluctuations going on. And those fluctuations in the economic activity are called as business cycles. They are to be called as business cycles. Business cycles are very commonly known as trade cycles. They are commonly known as trade cycles. So that is the meaning of trade cycle. Now I would discuss phases of trade cycles. Phases.
देखो मैंने बताया था फ्लक्चुएशंस, दिस फ्लक्चुएशंस कैन बी लाइक दिस, अप्स एंड डाउन्स फॉर्म में रहते हैं, राइट? बिजनेस एक्टिविटीज विल विटनेस अप एज वेल एज डाउन. ऐसे बेसिकली there are four phases of business cycles. Four phases. प्लास्टिक का स्केल. See, the economy will always witness this type of trade cycles. X-axis, Y-axis. On X-axis, I will measure time, and यहाँ पे I measure is GDP, gross domestic product. तो जब वो राइजिंग मोड पे रहता है, that is called expansion. जब टाइम के हिसाब से जीडीपी बढ़ेगा, इट इज कॉल्ड एक्सपांशन. जब वो टॉप लेवल पे पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड पीक. पीक, या फिर सम पीपल आल्सो कॉल इट एज प्रोस्पेरिटी. और जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउनफॉल होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन. सम एक्सपेंशन को रिवाइवल भी बोला जाता है. कॉन्ट्रैक्शन, या फिर सम पीपल कॉल इट एज स्लो डाउन. एंड जब एकदम लोवेस्ट लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, और सम पीपल कॉल इट एज ट्रफ. TRO TROUGH, ट्रफ. तो ये चार फेजेस है. वापस से डिप्रेशन के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद पीक, अगेन स्लो डाउन, एंड सो ऑन. These fluctuations will go on one after the another. There are four stages. हम लोग जो है, let us discuss them one by one. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी. ओके, तो इसका फर्स्ट फेज मैंने जैसे आपको बताया, बिजनेस साइकिल का सबसे पहला फेज
क्या होता है? तो इट इज एक्सपांशन। बिजनेस साइकिल का सबसे पहला फेज एक्सपांशन। तो ऐसे इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे हम लोग। एक्सपांशन में क्या होगा? इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, कॉमा एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एक्सेट्रा। ये सब चीजें जब इंक्रीज होते जा रही है, it is a clear cut indication that there is expansion stage going on in the economy. सेल्स बढ़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, एवरीथिंग विल गो ऑन राइजिंग। ओके, फिर यहाँ पे इसमें आगे यू शुड कीप इन माइंड दैट प्राइस एंड कॉस्ट आल्सो विल राइज। इस फेज में प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ेंगे। क्यों? कोई लॉजिक बताएगा मुझको? प्रोडक्ट के प्राइसेस भी इस फेज में बढ़ेंगे, ऐसा क्यों होगा? बताओ। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ने वाला है इसके अंदर, ऐसा क्यों होगा? मुझको बताओ। लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक है। डिमांड राइज है, वेरी गुड। क्यों डिमांड राइज होगा? ओम, डिमांड क्यों बढ़ेगा बताओ? सिंपल है, पीपल विल हैव मोर मनी। वेरी गुड मानो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है। इन दिस स्टेज एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू राइज। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस आर बाउंड टू राइज। देन इस पर्टिकुलर फेज का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? दैट राइज इन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगा। कैसे? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से ऐसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, और जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सेविंग्स इकोनॉमी में बढ़ना चालू होगा। एंड द मोमेंट सेविंग्स विल स्टार्ट राइजिंग, those savings will slowly and steadily get converted into investments. And last but not the least, higher standard of living. In expansion stage, people of the country will witness higher standard of living. They will witness higher standard of living, so that ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रहेगा? तो मैंने बताया कि इनकम बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के वजह से वी कैन सी दैट द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल विल आल्सो राइज,
and they will buy more variety of goods and services, leading to higher, or we can say better, standard of living. So ये आपका हो गया expansion stage of business cycle. अभी हम दूसरा stage discuss करते हैं. The second stage of the business cycle is peak, or some people call it as prosperity. Peak or prosperity. Now, as this said, peak. Do you know what do we mean by peak? It's a geographic word. इसका मीनिंग कोई बताएगा मुझको? I can say this is related to mountain, right? Mountain का जो सबसे highest point रहता है, that is called peak of the mountain. वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं business cycle की, तो in the business cycle we can observe that there is highest level of business cycle. I can say prosperity peak.